રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે ભારત સરકારના યુવા અને રમતગમત મંત્રાલય તથા સુફી ઇસ્લામિક બોર્ડના સંયુક્ત સહયોગથી નશામુક્ત અભિયાન કેદી જાગૃતિ સેમિનારનું આયોજન કરાયું। દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું 2047 સુધી દેશને નશામુક્ત કરવાનું સ્વપ્ન છે, જેને પગલે 2 ઓગસ્ટથી દેશભરમાં જુદી જુદી એનજીઓ અને આગળ આવી છે, જેના ભાગરૂપે મધ્યસ્થ જેલ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં 1500થી વધુ બંદીવાન ભાઈઓને નશાથી થતા નુકસાન અંગે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા અને તમામ બંદીવાન ભાઈઓએ નશા મુક્તિ માટે શપથ પણ લીધા। આ કાર્યક્રમમાં જેલ પોલીસ અધિક્ષક, સનાતન સંત સમિતિના અધ્યક્ષ, પૂર્વ કુલપતિ અને અલગ અલગ સંસ્થાના આગેવાનો તથા કાયદાના નિષ્ણાતો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। નશાયુક્ત ભારતની અમે એક नीव चालू करी है जुदी जुदी जेल में तेना एक भागरूपे आज राजकोट जेलना अमरा बंदीवान मित्रों साथ बेसी और चर्चा करी बाबते ज्ञान आप्યું કે साचू शू है, जीवन शू है ने जीवन की प्रणाली में नशाना कारण शू शू तकलीफों आवे। आ बाबत माटे अहींया जेलना स्टाफ ने बधा साथे रही अने सूफी अनवर शेख ने बधा सरस वक्तव्य आप्યું છે ने ते कार्य आ वेगवंत बनाववा माटे अमे सतत कार्यशील रहीशुं, ते संकल्प बधा पासे लेवडाव्यो। नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत सूफी इस्लामिक बोर्ड आयोजित और गुजरात सरकारना जेल सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत आज रोज राजकोट मध्यस्थ जेलना कैदीओ माटे नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत प्रवचन गोठववामां आव्युं, जेमां सूफी इस्लामिक बोर्डना भाई श्री अनवरभाई शेख, किरसरा आश्रमना ज्योतिर्नाथ बापू, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीना पूर्व चांसलर कमलेशभाई जोशीपुरा साहेब अने अन्य मेहमानों उपस्थित रह्या। नशाथी थता गैरफायदा, नशाथी थतुं व्यक्तिगत नुकसान अने समाज अने आखरे देशने थता नुकसान बाबते जाणकारी आपवामां आवी अने नशा मुक्तिथी शुं फायदा थाय छे ते विषे कैदीओने विगते वात करवामां आवी। बीजा हाईकोर्टना मित्रों, हाईकोर्टना एडवोकेटो अने परिवारना जेलना लोको साथे मळीने एक कार्यक्रम सेमिनारनुं आयोजन कर्युं, जेमां कैदी भाईओ बहनों माटे केवी रीते संकल्प लेवडावा अने केवी रीते नशानी मुक्ति करावडावी एनी माटे तमाम एमने माटे एक मानस परिवर्तन थाय ए माटेनी एक यादी आपवामां आवी अने तेमने एमना शारीरिक रीते केवी रीते सशक्त बने, आपणो देश केवी रीते सशक्त बने ते बाबतनी एक समज आपवामां आवी।